everyone. Today we are going to talk about the competency of court under Criminal Procedure Code Part 2. Part 1 इसका हमने कल किया है, जिसे आप देख सकते हैं. Yesterday it was conducted at 3 PM, जिसमें हमने hierarchy और competency को start किया था. Today we are going to take the discussion forward from the competency of courts. This is important for all these states because CrPC हर state में आता है. I hope everyone has started their preparation for Haryana and Rajasthan. This is a little background about me. I am Unnati Srivastava. I have done my masters in law from NLU Delhi in 2020, and I have also cleared NET in 2020. I got AIR2 in LA 2019 and also cleared the Supreme Court clerkship. I have faced the UP Judiciary interview in 2019 and written the mains of Delhi and Rajasthan Judiciary. Whenever you get on the Unacademy app, just use the code UNNATILIVE to avail discounts, and you can also follow my profile, which is the link for which is given in the description box. If you like my lectures and if you want to see what all I have covered, I will give that information here anyway, but you can also follow my profile. Before we begin the session, please like and share the session and also press the bell icon and subscribe to the channel. There's a whole dedicated team of educators on Unacademy who are preparing you for PCSJ. I hope सबको पता है Haryana and Rajasthan is what we have in sight, and there is a very good chance that UP Judiciary is going to come. The notification is going to come this very year. So you have no time to waste. You must get on Unacademy and start your preparation with us. There are n number of top educators on Unacademy from all over the country. Whosoever can awaken your interest in these subjects, do follow them. And you can also follow me from the description box. There is a profile link in the description box, and you can follow my profile as well. When you get on Unacademy, you can attend a lot of scholarship tests and you can compete with thousands of aspirants, and that will make you realize what is your position in the game. Now, there is something called a free special class every day. These classes are free. If you talk about me, I take my free special classes every day at 11 AM. You meet me live exclusively on Unacademy at 11 AM. So you must get on Unacademy to see all the courses that I am running there. And I'm going to tell you here that what all subjects I teach and what all subjects I plan to teach in the future. Indian Contract Act, this happens on every Monday at 11 AM. Then we do Constitutional Law on Saturday, CrPC on Sunday, Indian Evidence Act, this happens on Tuesday, and this actually happened today at 11 AM. You can also go and watch that lecture. I have talked about how to build a chain of circumstantial evidences, and I have discussed in that lecture the Priyadarshini Mattu case. IPC happens on Thursday. Soon we will be beginning with the local laws of Rajasthan and also whatever local law has to be covered for Haryana. We will do that. I have already covered a few lectures on Hindu law about divorce law. You can also type in the comment section what all you would like me to cover in any subject. Any subject, कोई ऐसा preference नहीं है, आप मुझे सिर्फ बता सकते हैं. And soon I am also planning to start CPC on one of the days, क्योंकि हमारे पास Friday और Wednesday रह जाता है. So we will do that. Now, what are the special class features? See, first, it is free. The way it is on YouTube, it is free. The usual sessions are 1 hour sessions in which, at least the way I take it, it is we read the Bare Act. The way I do it on YouTube as well, we read the concept and the case. And if उस टॉपिक से कोई भी recent exams में question आया है, so I make sure that I discuss that with you so that you stay updated, you stay dynamic, because preparation सिर्फ
आइसोलेशन में नहीं हो सकती कि मैंने एक टॉपिक को प्रिपेयर कर लिया. दिस इज नॉट हाउ इट इज डन. You have to be constantly in touch with PYQs. Even if you're preparing for your own on your own, please stay in touch with the previous year questions. The special class features are we have interactive live classes. We conduct poll for learners. We often ask questions and we would like to know आप कितना learn कर रहे हैं, आपका progress क्या है. As an educator, I would like to know that. That's why I keep asking a lot of questions in between. So we have this feature of conducting polls when you get on Unacademy, when you attend a class there, and this makes the class interesting because this will keep you engaged. It is not, what you need to understand, that it is not static learning. It is dynamic learning where you can also participate. You can raise a hand and ask a question. Once you follow an educator, like you can follow me through the link provided in the description box, you will never miss a class. You will always get the notification. कई बार क्या होता है, time change हो जाता है class का. Usually, my ritual that I follow is 11 a.m. on Unacademy, and I take 3 p.m. lessons Monday, Tuesday, Thursday, and Friday on YouTube. This is the ritual that I follow. But sometimes if there is a change, you will always get notified if you follow the educator. You can download the lecture notes. We always try to bring up good notes for you so that you can download it and make your own notes from it. And obviously, you can learn from anytime, anywhere. Now, this is one batch that I need to talk about. This is beginning tomorrow. So if you haven't subscribed to this, you must go on Unacademy and subscribe, and do not forget to use the code UNNATILIVE. These are the already commenced batches. So ये जो टारगेट बैच राजस्थान जुडिशरी का है, दिस इज स्पेसिफिकली टारगेटिंग एट राजस्थान जुडिशरी, एंड आई एम श्योर सिंस द नोटिफिकेशन इज आउट, फॉर्म फिलिंग चल रही है, अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी फोकसिंग ऑन राजस्थान. एंड राजस्थान इज अ पेक्यूलर स्टेट बिकॉज इट आस्क्स 50% of local laws, and in prelims it asks for 30% of Hindi and English. So there is a special preparation that is required for this particular exam, and this batch is going to cover everything that is needed for Rajasthan Judiciary. These are the special offers that we have. You can buy a 12-month subscription and you can get a 1-month free subscription. If you buy a 24-month subscription, you get a 4-month subscription free. So you must avail this offer because this is going to end soon. Mock test. I have talked about it at length many times, that how important mock tests are, and this is what Unacademy is doing. It is bringing you all updated according to the exams, the mock tests. So ye days hain uske, you can note this. Then there is a mixed bag series which happens on Friday, and then there's a detailed analysis. If somebody does not understand the need for a detailed analysis, let me tell you that टेस्ट देना एक बात होती है, बट उसका डिटेल्ड एनालिसिस समझना दूसरी बात होती है, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या गलतियां हो रही हैं, सो दैट उससे आप अपने को इम्प्रूव कर सकें. दीज आर द प्लस सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल. अगर आप कुछ भी सब्सक्राइब करते हैं तो यू कैन यूज द कोड उन्नति लाइव. Before we move forward, I'll urge you again to like and subscribe to the Unacademy YouTube channel, and you can also join the Telegram channel for all real-time updates and sharing of information. Okay, so हमने कल इसकी बात करी थी कि hierarchy and competency of codes under CrPC. Hierarchy हमने कंप्लीट कर लिया था. We had discussed section 6, but हमने competency भी स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने 28, 29 and 26 डिस्कस किया था. And then I had gone to discuss all the जो concurrent jurisdiction की बात करी थी. So let me remind you what section 26 was talking.
आई होप यू हैव योर बेयर एक्ट्स विद यू, बिकॉज बिना बेयर एक्ट के लेक्चर करना थोड़ा सा फ्यूटाइल हो जाएगा. तो आई होप, मैंने सारे सेक्शंस यहाँ सामने आपके होंगे, बट फिर भी आप अपनी बेयर एक्ट लेके आइए सो दैट आप उसमें इंपॉर्टेंट चीजों को मार्क कर सकें. तो सेक्शन 26 टॉक्स अबाउट कोड्स बाय विच offenses are triable. And one more thing, the way we are doing CRPC here, this is not what this is the sequence in which you actually study CRPC. If you have a keen interest in CRPC, you can go back to my profile and also watch all my lessons that I've already done on CRPC on Sundays, and then there are few extra classes as well. So I would suggest that you go and watch those sub lectures as well. Codes by which offenses are tribal. This is what section 26 is talking about. अब कौन सी codes की बात कर रहा है? One is code mentioned in schedule. Then it is talking about court of session, and then this is talking about high court. So if you see that it is giving a concurrent jurisdiction to high court and court of session. Now the question that we discussed yesterday कि ये concurrent jurisdiction देने की क्या जरूरत थी, उस पे I had told you कि ये जो existing sections हैं within CRPC, इनकी वजह से हमने ये concurrent jurisdiction section 409 also, ये concurrent jurisdiction court of session और high court को दिया है. Now let's try and understand section 407. Section 407 talks about power of high court to transfer cases and appeals. मतलब इसको अगर हम मोटी मोटी भाषा में कहें तो ये पावर ऑफ हाई कोर्ट होती है टू विथड्रॉ अ केस. अच्छा, इसको एक बार रीड करते हैं. Whenever it is made to appear to the High Court that a fair and impartial inquiry or trial cannot be had in any criminal court subordinate thereto, that some question of law of unusual difficulty is likely to arise. Third, that an order under this section is required by any provision of this code or will tend to the general convenience of the parties or witnesses or is expedient for the ends of justice. हमारे लिए relevant part सिर्फ इतना है 407 का. 407 if you look at it, it's a huge section, काफी बड़ा section है. जो आज हम discuss करेंगे वो हम 407 clause 1 इस पर्सपेक्टिव से एंड 407 क्लॉज 8 जिसमें हम पावर ऑफ विड्रॉल बाय हाई कोर्ट की बात करते हैं. सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, लेट मी ब्रेक डाउन द सेक्शन फॉर यू. हाई कोर्ट कैन विड्रॉ. नाउ यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट 407 में तो ये पावर है, दिस इज द पावर, बट इसकी जो कॉम्पिटेंसी है ये सेक्शन 26 ऑफ सीआरपीसी से आ रही है. क्यों? क्योंकि सेक्शन 26 टॉक्स अबाउट कोई भी मैटर किस कोर्ट के द्वारा ट्राई किया जाएगा. तो वो खुद हाई कोर्ट को ये पावर देता है कि वो मैटर्स को ट्राई कर सकती है, और ये सेक्शन 407 उसको वो पावर दे रहा है कि आप इस तरह से ट्राई कर सकते हैं, आप विड्रॉ करके ट्राई कर सकते हैं. So High Court can withdraw from Sessions Judge and also from the Magistrate. और ये Magistrate जो है ना, वो कोई भी Magistrate हो सकता है. When you further read on the section, you will realize that आपको ये जो है 1A, 1B, 1C, they are giving you the grounds for withdrawal. This becomes important for your prelims perspective.
दे कैन आस्क यू कि ये कौन से ग्राउंड्स हैं जिसपे हाई कोर्ट विड्रॉ कर सकती है। फेयर इनफ। तो हाई कोर्ट is that high court can withdraw from sessions judge or magistrate. What high court can also do is high court can transfer from one judge or court to another court within its jurisdiction. Within its jurisdiction. This is simple. अगर आपसे कोई पूछेगा कि हाई कोर्ट की पावर ऑफ विड्रॉल कहाँ पे है, तो आप कहेंगे 407 में। ये पावर की कॉम्पिटेंसी सेक्शन 26 से आती है, क्योंकि सेक्शन 26 में हमने कॉन्करिंग ज्यूरिसडिक्शन के बारे में पढ़ा था कि जो कोर्ट शेड्यूल 1 में मेंशन्ड है उसके अलावा हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन का भी कॉन्करिंग ज्यूरिसडिक्शन होगा, जो कि कल के सेशन में हुआ था। इफ यू हैवंट सीन दैट सेशन, वेट right now, watch this one and then go back and watch that session as well, क्योंकि ये continuity में चल रहा है। उसका नाम hierarchy and competency part 1 है। तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा ऐसे। उसके बाद this all is, ये होने के बाद there is something that we need to discuss about 407 clause 8. इसमें क्या हो रहा है? Let's read it. When the High Court orders under subsection 1 that a case be transferred from any court for trial before itself, it shall observe in such trial the same procedure which that court would have observed if the case had not been so transferred. Now understand what 4078 is talking about. 4078 is saying withdrawal हो गया, we have withdrawal under 407 clause 1. उसके बाद विड्रॉल करने के बाद ट्रायल होगा, राइट? देयर बी अ ट्रायल दैट विल बी कंडक्टेड. क्वेश्चन इज विच ट्रायल, ये कौन सा ट्रायल है? नाउ इन CRPC you would know that there are several trials, there are several methods which are given, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वारंट ट्रायल, then you have summons trial. तो इस तरह के, then there is something called court of session trial. तो ये भांति भांति प्रकार के ट्रायल्स के मेथड CRPC ने बताए हैं। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई किया है ये कि जब भी विड्रॉ होके हाई कोर्ट के पास केस आएगा तो वो same method that the trial court would have followed, वो सेम मेथड को फॉलो करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हाई कोर्ट कैन विड्रॉ फ्रॉम सेशंस जज एंड हाई कोर्ट कैन आल्सो विड्रॉ फ्रॉम मैजिस्ट्रेट। तो दोनों, अब सेशन जज से किया तो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल चलेगा। सेम मेथड जिस कोर्ट से आपने विड्रॉ किया है वो सेम मेथड अप्लाई होगा। Now why I taught you this is of course because this is a part of 407, but also I would like you to make a point of this this section because we are going to discuss it tomorrow as well. Tomorrow I am going to teach you something where the reference to this section will come back. So I urge you that आपको ये याद रहे कि ये क्या कह रहा है. So this is 407 we have understood. Now before we move to court of session, कोर्ट ऑफ सेशन के एक्चुअली होते हैं 3 तरीके जिससे वो वापस ले सकता है केस को अपने पास, जो मैंने आपको कल भी बताया था। 409, 209 एंड 323। ये 3 तरीके हैं जिससे कोई भी मैटर कोर्ट ऑफ सेशन के पास जा सकता है। बट इसको समझने के पहले लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग एल्स। सबको सेक्शन 190, आई प्लीज ओपन सेक्शन 190 इन योर बेयर एक्ट।
Section 190 talks about cognizance. It talks about cognizance. Section 90 में होते हैं 3 cases. There are 3 cases that it talks about. It talks about 191A, 191B, 191C. ये 3 तरह से cognizance लिया जा सकता है. 191A says that you may take cognizance on complaint. 191B says you can take cognizance on police report. And 191C says that you can take cognizance on information. We will read about section 190 in great detail whenever we will do cognizance. But for our understanding of how the cases are withdrawn or committed to court of session, we need to understand कि actually होता क्या है, what is the procedure. So let me explain you. Let's take case 1. Now, एक complaint आई. Complaint will always come to the magistrate. Complaint आई, उन्होंने इस पे cognizance लिया. ये cognizance उन्होंने लिया 191A में, right? उसके बाद complaint proceedings हुई. उसके बाद issue of process हुआ. Issue of process का section है section 204. फिर there is a step which is called supply of documents, which is covered under section 207, 208. And then charges are framed और फिर ट्रायल होता है और फिर जजमेंट आता है. ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है. जो कंप्लेंट होगी तो ऐसा होगा. एंड देन देयर आर आल्सो प्रोसीजर्स फॉर सिमिलर. थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्रोसीजर में, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे अगर पुलिस रिपोर्ट केस है या फिर इंफॉर्मेशन केस है. मेरा आपको ये समझाने का मतलब ये था कि आप ये समझें कॉग्निजेंस की स्टेज कहाँ पे आती है. कंप्लेंट या एफआईआर या फिर इंफॉर्मेशन आने के बाद कॉग्निजेंस की स्टेज आती है. कॉग्निजेंस का मतलब होता है पुटिंग योर जुडिशियल माइंड. पहली बार आप जब जज अपना जुडिशियल माइंड लगाता है कि इस मैटर पे मुझे प्रोसीड करना है कि नहीं करना है, दिस इज द कॉग्निजेंस स्टेज. अब इसको मैं आपको समझाती हूँ एंड देन वी आर गोइंग टू रीड दी सेक्शंस एज वेल कि हाउ 409 कैसे होता है, 323 कैसे होता है और 209 कैसे होता है. लेट्स से जेएम के पास कंप्लेंट आई, उन्होंने इस पे कॉग्निजेंस लिया. सेक्शन 190 में कॉग्निजेंस ले लिया. अब कॉग्निजेंस लेने के बाद उन्होंने इसको कमिट किया. ये कमिटल है 323 का. 323 कब आता है? जब मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि ये कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर देना चाहिए, मुझे ये केस को कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट करना चाहिए, तो वो कोर्ट ऑफ सेशन को कमिट कर देता है. ये है क्रक्स 323 का, which we will read एक बारी from the Bare Act as well. Moving forward, suppose there is this JM, उनके पास उन्होंने लिया कॉग्निजेंस और उसके बाद उन्हें ये पता चलता है कॉग्निजेंस लेने के बाद कि दिस इज नॉट ट्राइबल बाय हिम, इट इज नॉट ट्राइबल बाय JM and it is exclusively tribal by the court of session. तो वो 209 में इसे कमिट कर देते हैं.
Fair enough. And when we talk about withdrawal by court of session, जो कि यहाँ पे सेक्शन मेंशन्ड है, तो कोर्ट ऑफ सेशन विड्रॉ करती है अंडर सेक्शन 409 विद कौन से केस को, विच वॉज ट्राइबल बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। और इन तीनों ही केसेस में जो कॉम्पिटेंसी है वो आती है सेक्शन 26 से। I hope you have understood this. Now let's read कि सेक्शन 409 क्या बोलता है, 323 क्या बोलता है और 209 क्या बोलता है। 409 talks about withdrawal of cases and appeals by session judges. मैंने आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है that I have already explained you. Now we are only reading the section. So pay attention when we are reading the section. A sessions judge may withdraw any case or appeal or recall any case or appeal which he has made over to assistant session judge या CJM. So यहाँ पे वो किससे विड्रॉ कर रहा है, ASJ या CJM। आई होप आपको असिस्टेंट सेक्शन जज और CJM पता है, कल हमने 28 और 29 को डिस्कस किया था, उसमें मैंने आपको ASJ और CJM के बारे में बताया था। यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड है कि विड्रॉल सिर्फ इनसे होगा, नॉट बाय JM। JM के यहां से विड्रॉ नहीं हो रहा है, सिर्फ इन लोगों के यहां से विड्रॉ होगा। विड्रॉ करने के बाद भी वी विल रीड कि क्या होगा। विड्रॉ करने के बाद उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला, इट कैन ट्राई इट हिमसेल्फ, और सेकंड, इट कैन ट्रांसफर it to some other court. So at any time before the trial of the case or the hearing of the appeal has commenced before the additional sessions judge, a session judge may recall any case or appeal which he has made over to any additional sessions judge. Where a session judge withdraws or recalls a case or appeal under subsection 1 or subsection 2, ये मैंने आपको बताया अभी, he may either try the case in his own court or hear the appeal himself or make it over in accordance with the provisions of this court। तो या तो वो खुद ट्राई कर सकता है या फिर ये किसी और कोर्ट को ट्रांसफर कर सकता है। और प्लीज रिमेंबर द पॉइंट दैट आई हैव टोल्ड यू कि जब CJM या ASJ के पास मैटर होगा वो तभी विड्रॉ कर सकता है। द मैटर शुड नॉट बी विद द मैजिस्ट्रेट। आई होप दिस मेक्स सेंस एंड दिस इज क्लियर। This is what section 409 is. Now let's understand 323. Procedure when after commencement of inquiry or trial, magistrate finds case should be committed. Important words to note. इंक्वायरी और ट्रायल के कमेंसमेंट के बाद, मतलब नॉट एट द इन्वेस्टिगेशन स्टेज। ये मैं आपको जब हम 3 स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल पढ़ेंगे तब मैं आपको इन तीनों में डिफरेंस बताऊंगी कि क्या होता है। लेट्स रीड। इफ इन एनी इंक्वायरी इनटू एन ऑफेंस और अ ट्रायल बिफोर अ मैजिस्ट्रेट इट अपीयर्स टू हिम एट एनी स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स। अब ये देखिए, मैजिस्ट्रेट कहां से विड्रॉल हो रहा है, तो देखिए इसका क्या मतलब है, ट्रायल इज बीइंग कंडक्टेड बाय द मैजिस्ट्रेट। राइट, नेक्स्ट पॉइंट, इसको रीड कर लेते हैं फिर मैं आपको पॉइंट्स में बताती हूँ, ब्रेक डाउन द सेक्शन फॉर यू। It appears to him at any stage of the proceedings before signing judgment that the case is one which ought to be, very important word, ought to be। जब मैंने आपको बताया था ना कि मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है
कि ये this should be tried by the court of session and not by him. That is when he will do the committal of section 323. This is a pet and a favorite topic for prelims as well as mains. Tried by court of session, he shall commit it to that court. Shall. मैंडेटरी है कि वो ये कमिट करे अंडर द प्रोविजंस हियर इन बिफोर कंटेन्ड एंड देयर अपॉन द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 18 shall apply to the commitment so made. चैप्टर 18 क्या है? चैप्टर 18 इज कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल. अब इसको समझिए. बिफोर ही साइंस द जजमेंट, who? The magistrate. Before he signs the judgment, he can commit the case to the court of session. और क्या है? He thinks it is ought to be tried by court of session. Let me tell you that 323 और 209 में डिफरेंस लिखने को आता है और यही उसका डिफरेंस है कि 323 में एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नहीं होता, बट द मैजिस्ट्रेट थिंक्स दैट इट शुड बी कमिटेड टू द कोर्ट ऑफ सेशन. And when we talk about 209, it is exclusively tribal by court of session, and that is where the magistrate actually commits it to the court of session. So, and कौन सा ट्रायल होगा जो मैंने आपको बताया? चैप्टर 18 का कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल होगा. राइट? कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल का सेक्शन है 225 to 237. ये वाला कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल चलेगा जब भी ये कमिटल में केस कोर्ट ऑफ सेशन के पास जाता है, विच मेक्स सेंस कि ऑब्वियसली जब कोर्ट ऑफ सेशन इसको ट्राई कर रही है तो कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल ही चलेगा. राइट? अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल लेट्स अंडरस्टैंड कि ऐसा मैजिस्ट्रेट को क्यों लगेगा कि उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ये कमिटल करना चाहिए. सो फॉर एग्जाम्पल इट मे बी अ केस विच इज अ कॉम्प्लिकेटेड केस, जैसे कि इश्यूज लाइक सिक्योरिटी, जैसे कि थेफ्ट तो ठीक है, थेफ्ट तो छोटा क्राइम है, लेकिन थेफ्ट इन अ प्रेसिडेंट्स हाउस, now this becomes an issue. This is not ordinary theft, this is about security of the nation also. So secrecy and security of nation involved हो जाती है अगर वो theft president के घर में होता है. So अब ये ट्राइबल बाय जेएम था, बट उनको लगता है कि इस तरह का offense should be tried by court of session. तो ऐसा कोई offense can be tried by court of session. Now if you have understood this, let's understand 209. This is the last thing that we are going to do today, and then we will do competency part 3 tomorrow, and we will complete this with few things on cognizance. So at 3 tomorrow we are going to do this. Now, commitment of case to court of session when offense is tribal exclude. I have talked enough about this, but this is the section that we need to read. When in a case instituted on a police report or otherwise, मैंने आपको पहले ही बताया 3 होते हैं, तो ये otherwise में complaint या information आएगा. The accused appears or is brought before the magistrate, and it appears to the magistrate that the offense is triable exclusively by the court of session. He shall. ये इसमें important है कि offense is triable exclusively by the court of session. A. Commit after complying with the provisions of 207-208. I had discussed this जब मैं complaint proceedings आपको समझा रही थी. As the case may be, the case to the court of session and subject to the provisions of this code relating to bail, remand the accused to custody until such commitment has been made. Subject to the provisions of this code relating to bail, remand the accused to custody during and until the conclusion of the trial. Send to that court the record of the case. ये
रिकॉर्ड भी भेजोगे आप जब आप कमिटल करोगे, and the documents and articles if any which are to be produced in evidence. सारे evidences जो आपके पास आए थे उसको आप कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेजोगे जब भी आप कमिटल करोगे. Notify the public prosecutor of the commitment of the case to the court of session. Let's try to understand. Let's break this section down. What it is saying. तो देखिए इसमें important words क्या क्या है. पहला तो यही है. It is exclusively triable by court of session. Then otherwise. The word otherwise as I explained to you. Otherwise का मतलब है complaint या फिर information. Right? And then we have committal of case to court of session. अच्छा, और accused को आप दो options देते हो जब कमिटल हो रहा है. या तो आप उसको बेल में छोड़ दोगे या आप उसको जेसी दैट इज जुडिशियल कस्टडी में भेजोगे. अगर सफिशिएंट ग्राउंड्स हैं तो आप उसको बेल दे दो. यही बात कर रहा है यहाँ पे ए और बी जो है ना. सफिशिएंट ग्राउंड है तो बेल दे दो या जुडिशियल कस्टडी में रख दो. दो ऑप्शन है इसमें आपके पास. टिल द डेट ऑफ कमिटल या एंटायर पीरियड ऑफ ट्रायल. फाइन. So ये सब कुछ is what 209 is talking about. Now we will stop here because we have completed कि court of session के पास केस कैसे कैसे जाएगा. So it's only prudent to stop here and we will discuss further in the next lecture that we will have tomorrow at 3 p.m. Till then, all of you please take care of yourself and keep in good health. I will see you tomorrow.